Hello everyone, myself Dr.Manasi Patil. So this is an exclusive video for 4th BHMS students and especially in relation to Homoeopathic Materia Medica. Understanding the soul of remedies, a practical approach to Materia Medica. बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज है मटेरिया मेडिका कैसे पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको मेमोराइज कैसे करना है, उसको कैसे ध्यान में रखना है और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सिमिलर रेमेडीज़ रहती है, पॉलीक्रेस रहते हैं, सो उसका जो पॉलीक्रेस का ड्रग पिक्चर है, वो पूरा का पूरा कैसे मेमोराइज़ करें, जिससे कि अदर रेमेडीज़ के साथ कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? सो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ मटेरिया मेडिका? मटेरिया मेडिका है क्या? Materia Medica is the biography of remedies or medicines. Okay, just like every patient has a story, every medicine has a story too. Okay, so Materia Medica is equal to symptoms, sensations, modalities, mental state, clinical applicability, and remedy relationships. Okay, but remember, Materia Medica is not a memory subject, it is a perception subject. You don't study remedies, you understand the personalities. Okay. For example, see, if I say impatience plus irritability plus the pace of the remedy wants everything fast, which remedy comes to your mind? Definitely it is Naxomica. So we don't need to memorize this. We have to feel this. We have to perceive the remedy. Okay. So before diving into uh, any specific remedy, I would like to introduce you to a 5-layer method. My 5-layer method to understand any remedy from our materia medica. Okay. तो यहाँ पे जब भी हम कोई रेमेडी सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे, तो उसका एक यूनिक मेथड है। वैसे जैसे डॉक्टर केंट सर ने कहा है अपने लेक्चर्स में, प्रिस्क्राइबर्स है उतनी मेथड से, मतलब हर प्रिस्क्राइबर अपनी अपनी मेथड से रेमेडी प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन उसके पहले जब हम 4th ईयर में है, 4th ईयर बीएचएमएस में है या फिर इंटर्न है, तो कैसे समझे, कैसे हम उसको मेमोराइज करें, कैसे हम उसको ध्यान में रखें सारी रेमेडीज को। ठीक है, तो मैंने एक इजी मेथड ढूंढ लिया है ताकि हम याद कर सके, हम इजीली उन रेमेडीज को अपने दिमाग में रख सके। Okay, so what is this 5-layer method? So one by one, I will tell you the layer. So first layer is sensation and theme. That is the core feeling of the remedy. What is the inner feeling of that specific remedies? Okay. Second layer is psychology or the mind of that remedy. That means the mental symptoms. Okay, mind symptoms. Then third is physiology. Physiology is nothing but the sphere of action of that specific remedy, or on which system of the body that remedy affects. Okay. Then fourth layer is keynotes. So keynotes are what? The high yield exam points. Okay. And fifth layer is clinical application. Clinical application is for how do I use this remedy in clinic or in OPD. Okay. So we will practice one remedy in these 5 layers. So before that, see, till third BHMS, you all have focused on keynotes, characteristics, or comparisons. Okay. So in the fourth BHMS, the focus shifts to bigger polycrace, clinical application, remedy relationships, pathological generals, organ affinities, causations, observation based study. Okay. So this year you have to move from remembering remedies to reasoning remedies. Okay. So now we will understand one simple remedy uh, according to this 5-layer method, and let us see if you can
perceive this remedy. Okay, so the remedy is aconitum napellus. So aconite का कोर फीलिंग क्या है, जो फर्स्ट लेयर हम जानते हैं, दैट इज द इनर मोस्ट और द थीम ऑफ द रेमेडी क्या है, इसका कोर क्या है। एकोनेट का कोर है सडन violent conditions with intense fear of death. Okay, every aconite situation begins suddenly, progresses rapidly, and it is life threatening. मतलब इतना sudden onset, just a breeze of cold wind and the patient is intensely ill. Okay, or the if he has got fever, the intensity of the fever will be uh, on the peak. Okay, and there will be a panic situation, and uh, there will be fear of death, though the condition is only of cold, only of simple coryza or simple fever. Anything, condition can be anything, but the onset is sudden and intensity is high, and the patient is feeling fear of death. Like I had a patient last week only in my clinic. The lady, she was a lady, and she was having some coryza with pain in abdomen, with pain in throat. Okay, so what she said, uh, she also having thyroid complaints. So what happens, whenever she gets cold, she feels like there is something is being choked up. Okay, fear of suffocation is there, and she feels that uh, I'm going to die. Okay, so nothing will help me, and I'm going to die with this uh, condition or with these symptoms. So ये होता है एकोनाइट का जो पिक्चर होता है, मैडम मैं मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगी, तो मुझे अभी मैं अभी मरने वाली हूँ ऐसे लगता है मुझे, जब भी मुझे ये कोई थ्रोट का कंप्लेंट होता है। एक तो थायराइड है, उसके ऊपर वो सफोकेटिव, इतना सफोकेटिव फील होता है कि आई कांट ब्रीथ। तो ये होता है, मतलब सिंपल कंडीशन होती है लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और पेशेंट को लगता है कि अब डेथ आने वाले, मतलब इतना पैनिक क्रिएट होता है। सो दिस इज द कोर फीलिंग ऑफ, कोर थीम ऑफ एकोनाइट। ओके, सो माइंड में क्या क्या सिम्टम्स हम देखते हैं, इसका सोल क्या है। माइंड इज द सोल। ओके, सोल ऑफ एकोनाइट। तो उसका उसके क्या क्या सिम्टम्स हम देख सकते हैं। एक तो है सडन फ्राइट, फिर पैनिक अटैक्स, रेस्टलेसनेस, ही प्रेडिक्ट्स द टाइम ऑफ डेथ, कि अभी नेक्स्ट डे ये टाइम पे आई एम गोइंग टू डाई। ओके, देन टॉसिंग इन एगोनी, फियर ऑफ क्राउड्स, फियर ऑफ टनल्स, फियर ऑफ अर्थक्वेक्स। मतलब जो भी डरावनी चीज है, जो भी बहुत ज्यादा उनको पैनिक में डालती है, वो चीजें है, क्राउड है, टनल है, अर्थक्वेक है। ओके, सो फियर उनके लिए क्या है, इट इज लाइक अ कैटास्ट्रोफ, कैटास्ट्रोफ इज हैपनिंग राइट नाउ। मतलब अभी कुछ ना कुछ ऐसा डिजास्टरस हो जाएगा कि आई एम गोइंग टू डाई। ओके, सो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें आर्सेनिक का फियर एंड एकोनाइट का फियर कैसा होता है। सो एकोनाइट का जो फियर होता है, दैट इज सडन, इंटेंस एंड पैनिक, और आर्सेनिक जो है स्लो है, एंक्शियस है। उसमें क्या है, फियर है, फियर ऑफ डिसीज ज्यादा है, एंड फियर ऑफ इनसिक्योरिटी की वजह से ज्यादा फियर है। ओके, सो दिस इज द बेसिक difference in aconite and arsenic. So moving ahead to the third layer, that is physiology. Physiology means the sphere of action, just I said. Okay, so what does aconite affects? Aconite affects nervous system, circulation, respiratory system, and acute inflammatory conditions. So, and everything is sudden onset, high intensity, red, hot, painful. Parts are red, hot, and painful, and there is a dryness. Okay, so जैसे हम बोले कि फीवर, फीवर कैसा होता है, सडन होता है,
हाई ग्रेड फीवर होता है एंड स्किन इज ड्राई एंड देयर इज अ ग्रेट थर्स्ट. ओके, सो दीज आर द peculiar points of aconite. ओके, देन फोर्थ लेयर जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम के लिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यू के लिए की नोट्स आपको, की पॉइंट्स आपको पक्के पक्के याद होने चाहिए. ठीक है, तो क्या है की पॉइंट्स, क्या है एकोनाइट के? सी, फियर ऑफ डेथ, प्रेडिक्ट्स द टाइम ऑफ डेथ, देन सडन एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक, फ्राइट, exposure to dry cold wind, intense thirst for cold water, pains are intolerable, one cheek red, one pale. Sometimes we can see this. Okay, there are other remedies also. You can write in the comment box which are the remedies. Then early stage of inflammation. Okay, so these points should be on your fingertips. Okay, so that you can remember aconite in at your fingertips. Okay, then the last part, what is clinical application. So clinical, कैसे हम clinically इसको अप्लाई करें, ये तो सब हमको थ्योरी समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे होता है. ठीक है, so aconite is one of the best acute remedies for early stages of fever, acute bronchitis, cough, panic attacks, shock after accidents, neuralgia after cold exposure, then sudden hypertension, pleurisy onset. ओके, सो यहाँ पे की पॉइंट क्लिनिक में भी हमको क्या ध्यान में रखना है कि इफ अ पेशेंट कमिंग विथ symptoms that are intense, sudden, plus fear and shock, huh? Then you definitely have to think aconite. Okay, फटक से अपने दिमाग में एकोनेट आना चाहिए. जो पैनिक में पेशेंट आता है, पहले जब भी शॉक लगता है या फिर कोई भी शॉक हो, एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक है, मतलब कुछ भी उनको न्यूज़ मिले या फिर कोई भी ऐसी सडन कोई इम्पैक्ट उनके ऊपर हो और सडनली पेशेंट पैनिक में जा रहा है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू थिंक ऑफ aconite. Okay, so this is how we are going to learn the remedies. Okay, so ये कैसे करें और कैसे हम पूरा मटेरिया मेडिका याद में रखें. तो मिनिमम आपको कितना टाइम देना है? मैक्सिमम 25 टू 30 मिनट्स या फिर 35 मिनट्स. ठीक है, मिनिमम 25 एंड मैक्सिमम 35 मिनट्स एवरी डे. इफ यू गिव for this Materia Medica study, you will definitely get through your fourth year exams or paper. Okay, because this year you will be having Materia Medica for 400 marks. There will be two papers, paper 1 and paper 2, and Viva for 200 marks. Okay, so coming to the main part, that is about the course. So I have designed this course for specially for fourth BHMS Mathematical students and also for the interns who have recently passed. Okay, so what techniques you are going to understand in this course? Okay, or what techniques I am going to teach you in this course. Okay, see, image based remedy learning. That means you will visualize the remedy as a person. Then story method to remember the remedy. In form of stories we can remember the remedies easily. Okay, triads जो होते हैं, threes का जो ग्रुप होता है. ठीक है, देन कंपैरिजन चार्ट्स, कंपैरिजन के चार्ट्स होंगे. जैसे एकोनाइट और बेलाडोना को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें कॉमन होती है या फिर क्या क्या चीज़ें जिससे हम रूल आउट कर सकते हैं रेमेडीज को. ठीक है, तो वो डिफरेंशिएशन टेबल्स आपको मिलेंगे. क्लिनिकल रूब्रिक्स, लर्न हाउ ईच रेमेडी अपेयर्स इन रेपर्टरी. मतलब मटेरिया मेडिका तो पढ़ा हमने, उसको हम रेपर्टरी के लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सो दैट यू कैन यूज इट इन द क्लिनिक्स इजीली. देन पैथोलॉजिकल जनरल्स,
Okay, that means what type of patient gets what type of disease. So these techniques will make Materia Medica unforgettable. Okay, also we will include एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एग्जाम की स्ट्रेटेजी कैसे, एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है, लॉन्ग आंसर्स कैसे लिखने हैं, शॉर्ट नोट्स कैसे लिखने हैं, एमसीक्यूज के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे और ये कोर्स आपको क्या कैसे मदद करेगा. ओके, सो दिस कोर्स विल हेल्प यू टू understand remedies deeply, remember symptoms for a lifetime, learn clinical application, OPD ready remedy differentiation, daily notes, PDFs, charts, weekly tests होंगे. Okay, exam oriented, practice oriented approach. Okay, so by the end of this course, I guarantee you Materia Medica will stop being confusing and start becoming interesting, plus clinical plus logical. Okay, so thank you so much for watching this whole video. I am sending the link of the course in the description, and we have also homeopathic application, that is Mission Homeopathy. You can download that application, you can learn free, you can have the courses, different courses are there. You can definitely join and just go through and learn homeopathy in easy way, in palatable way. Okay, so thank you so much. Go and see the description and join the course. Happy learning. Bye bye.